ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः कुबेरेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती माता नमः। એટલે તમારા કુલદેવીનું નામ બોલો એટલે તમારે નામ લઈ પછી ચડાવવાના બરોબર। एकाय नमः ह्रीं सावित्रे नमः ह्रीं विद्याय नमः ह्रीं जयाय नमः ह्रीं देशनाय नमः ह्रीं स्वदाय नमः ह्रीं मातृभ्यो नमः ह्रीं लोकमातृभ्यो नमः ह्रीं स्वाहाय नमः ह्रीं प्रज्ञाय नमः ह्रीं सरस्वती नमः। ये पढ़ी હવે થાળીમાં મૂકી દો અને ભાઈઓ ને બહેનો બધા જમણા હાથમાં ચોખા પકડી રાખો। માતાજીનું ध्यान धरवानो। मेघासी देवी विदिता किल सारा दुर्गासी दुर्गा भवसागर नोर संगारी हाथ कुलदेवी चढ़ाई दो छो प्रतिष्ठा वरदा भवत। ये कलश थाली ने बहार लई लेवानो अने माताजीनी मूर्ति थाली में बेसाड़ी दो। चोखानो थाली मूर्ति बेसाड़वानी। चलो चोखानो पड़ियो लई लो थाली ने बहार खाली मूर्ति थाली में बेसाड़ी दो। चार चमची वरी माताजी पर जल चढ़ाओ। ह्रीं वसोद्धारा सगणी दोर्यादि हाथ कुलदेवी नमः पाद्यं समर्पयामि। वसोद्धारा सगणी दोर्यादि हाथ कुलदेवी नमः हस्योर्घ्यं समर्पयामि। वसोद्धारा सगणी दोर्यादि हाथ कुलदेवी नमः हरिज्ञान्ते आचमन्यं शुद्धोदकस्थानं समर्पयामि। एक चमची वरी पंचामृत चढ़ाओ। पयोदधि कृतं देवा मधु च शतकराय पंचामृतमयानि दां सानादां प्रतिगृह्य पंचामृत स्नानं समर्पयामि। 2 चमची जल चढ़ाओ। पंचामृत स्नानाधेन शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानाधेन शुद्ध आचमनं समर्पयामि। हाथमा फूलनी પાંદડી રાખવાની। બોલવાનું ઓમ महालये विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो कुलदेवे नमः। पुष्प चढ़ाई दो। चमची भरी जल पकड़ी राखो। अनेन पूर्वाराधने वसुद्धा सगणी ओम आत्मकुलदेवे नमः। अभिषेकादे पुनगंध पुष्पाभ्याम सांभोज्या चढ़ाई दो। હવે કુળદેવી માતાનું નામ લેતા લેતા તમારે અભિષેક કરવાનો। આપણે ભગવાન ગણપતિ દેવનો અભિષેક કર્યો એમ આપણે કુળદેવી માતાનો અભિષેક કરીશું। માતાજીનું મનમાં નામ લેતા લેતા જલ